Data file handling in Python. Today we will see how to read from a text file or how to write in a text file. Okay. For that we have to go to Python. Let us open our Python screen. This is Python. Here we will now create one file. First of all, when we are working with text file, we have to know the different modes: read, write, read. Inside read mode we are having read and read lines function. Same way, while we are writing anything in a text file, we are having write function or write lines function. Okay, let us open first of all a file. Let f equals to open any file name. Let it be class 12 dot txt. Okay, comma, we want to read, that's why R for read mode. Print f dot read 10. What it will do? It will read the first 10 letters from that particular file. Let us write one more thing. Print f dot read lines. What it will do? It will print all the lines written in file 12.txt. Okay, we can use f dot read line function also. We are having read line function also for our work. Okay, let us save this file. Control S for saving, as we all know. pg1, I had given file name pg1 program 1. F5 to run that function. What it had done? Read 10 letters. Wherever their cursor is, from that particular position, 10 letter, and then read line, and at the last, read lines and read line. These three things we are having in our file. How to see that file? For that, let us go to our file where we had inside the Python folder in C drive. I think it is in D drive. Yes, Python. File name is pg1. I had given now. Yes, this is pg1. This is the file I want to open. Hello, we are Indians. God protect us from COVID-19. These three lines I had written here. Okay, in file number 12.txt. That's why we are not getting it. See,
for the case of this function, देखिए यहाँ पे भी हेलो वी आर, आर का ए आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया यहाँ पे। आफ्टर दैट रीड लाइन्स और रीड लाइन, देखिए दोनों क्या कर रहा है। रीड लाइन में क्या किया, आर इंडियन, ए के बाद से शुरू किया, आर इंडियन गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोविड-19, इसको अलग अलग लाइन से लेके यहाँ पे लिख दिया। ओके, इन दिस वे we are reading from a text file. Same way we can write also. For writing, what we have to do, okay, one thing more, whenever we will open any file, we must close that file. Okay, now x equals to, let another variable open same file dot txt in write mode। ठीक है, राइट मोड में उस फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी वांट टू राइट। लेट एनी, फॉर इनपुटिंग एनी text or later enter a string। ठीक है, एक स्ट्रिंग एंटर किए, अब उसको क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, सॉरी राइट करते हैं। p इक्वल्स टू x डॉट राइट। क्या राइट करना है, जो भी i के अंदर आएगा उसको राइट करना है। ठीक है, हम लोग उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, x डॉट राइट माई नेम इज राहुल, ये भी राइट हो गया। ठीक है, x डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिए। हम लोग पहले रीड किए उसी फाइल में, और उस फाइल में कुछ लाइन और लिखते हैं। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग बोल रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर किया जाए। टुडेज डेट इज 30/10/2020। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो रीड कर लिया, यहाँ पे क्या था, राइट करना था हमको। राइट तो मेरा हो गया, अब कंप्लीट हुआ कि नहीं, वहां पे एक हम मैसेज अगर दे दें, प्रिंट डेटा इंसर्टेड, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे आ गया टुडेज डेट, जो जो हम कर रहे थे, उसके बाद इज 30/10/2020, माई नेम इज राहुल, फिर एंटर स्ट्रिंग यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे, पहली बार देखिए क्या था, पहले जो हम लोग लिखा हुआ था वही आ रहा था, बट दिस टाइम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, एज बिकॉज वी आर इन द राइट मोड। राइट मीन्स डब्ल्यू मोड में हम लोग काम कर रहे थे, और डब्ल्यू मोड से हम लोग काम करते करते अपेंड नहीं होता है यहाँ पे, मीन्स जो भी लिखेंगे वो ओवरराइट होता है, दैट्स व्हाई पुराना वाला ओवरराइट हो गया और नया वाला आपके सामने आ गया। ओके, अगर वहां पे अपेंड करते, डब्ल्यू के जगह पे ए लिखते, तब वहां पे क्या होता, वो फाइल आपका जो पहले लिखा हुआ था वो भी रहता, कंटिन्यू, उसके लास्ट में आपका मेन स्ट्रिंग ऐड हो जाता। ओके, this much is for text file read and write mode. Next will be next time.